mistake. So let's begin with the first type of problem solution essay. See, what is a problem solution essay? First, understand this. In a problem solution essay, they give you a problem. Like here, they've given us a problem. The problem is nowadays, older people who need employment have to compete with younger people. So the problem is that old people have to compete with young people. I understand that. What problems does this cause? नाउ देर आस्किंग इसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं सोसाइटी पे, इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस. सो इन अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे फर्स्ट दे गिव अ क्वेश्चन, देन दे आस्क यू टू थिंग्स. यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछे क्या इसके इफेक्ट्स हैं और क्या सॉल्यूशंस है, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस. हर बार they don't ask the same thing. In fact, they're going to ask you two things out of the three things which I'll just cover. So out of the three things, they are going to ask you two things. सबसे पहला काम हमारा ये है कि क्वेश्चन देख के ये अंडरस्टैंड करना उन्होंने क्या पूछा है. Because if you make that mistake, then your answer can never be correct. So um, let me just write it down for you, and I'll share this with you. You don't have to write it down. So they can ask three things. Out of the three things, they're going to ask you two things. So in this essay, they ask you solutions and effects. In some cases, they are going to ask you reasons and solutions. In some cases, they are going to ask you solutions and effects. In some cases, reasons and effects. So the first job that you have when you attempt this essay is to understand what are they asking you. क्योंकि अगर वो गलत कर दोगे सारा ऐसे गलत है. For example, they're asking you reasons, but you end up writing solutions. They would not give you bans. आधे नंबर तो गए ना, क्योंकि आपने लिखे ही नहीं solutions. पूछा था solutions and effect, you ended up writing reasons and solutions. So this is the biggest mistake that students make in this essay. And let me be honest, I have also made this mistake previously. Now, what I'm going to do is I'm going to show you all three types of questions first, ताकि ये clarity हो जाए कि यहाँ पे three type के questions हैं. So let's come back here. So the next type are what are the causes? Reasons पूछे जिसके अंदर. So now let's look at this essay. Some businesses find that new employees lack in basic interpersonal skills, such as the lack of ability to work with a colleague as a team. What are the causes? Now they're not asking the problems or the effect. They're asking you the causes. Causes means reasons. And then they're asking you certain solutions. So that's what they're asking here. So this is the second question. Okay. And the third type would be the first one we did is where they asked you effects and solutions. Here they asked you causes and solutions. The third case will be where they ask you reasons and effects. So let's come to that essay also. So the three types of essays, I tell my students, if you want to prepare this essay, write all three once. Write this one, write that one, like all three should be written. Okay. This is again effects and solutions. What problems does it cause? How can we solve this problem? Okay. So okay, the next one would be, yes, here. What are the reasons and what problems might it bring to the society? So now look at this question. They're asking you reasons and problems. So do you understand what are they going to ask you? They're going to ask you two things out of three. First, you read the question and you understand what are they asking you. If you don't do that, you'll end up making a mess of this essay. Is this clear? Was I too quick? Should I repeat? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You're saying yes to repeat, right? Yes, Yeah. sir. Okay. Just hold on. I'll do what? मुझे ना ये कर लेना चाहिए था. I should have done that. I'll do this thing right now with you. मैं भी जैसा यही बोलने वाला था. Okay. एक second. जब तीनों इकट्ठे लिखे होंगे ना, that will give you more clarity. So let me write all of them together so that we are clear. All of you are clear. Okay. Just give me 1 second.
I should have been better prepared. Just give me 1 second. Okay, done. Now I'm okay. Can you all see the screen now? Yes, sir. Okay. So there are 3 types of questions यहाँ पे देखो अब तीनों को अंडरस्टैंड करो तीनों में डिफरेंस देखो क्या है देखो जो पहला टाइप है ना उन्होंने रीजंस पूछे हैं और इफेक्ट्स इन मेनी कंट्रीज टुडे देयर इज insufficient respect to all people. What are the reasons? What problems might it bring to the society? So basically यहाँ पे इफेक्ट्स की जगह मेरे को प्रॉब्लम्स लिखने दो ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए. प्रॉब्लम्स का मतलब इफेक्ट्स ही क्या इफेक्ट्स ही होता है कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है तो यहाँ पे रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस पूछे. अब यहाँ पे आओ व्हाट आर द रीजंस हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे उन्होंने रीजंस एंड क्या पूछे हैं सॉल्यूशंस. देखो पहले वाले ऐसे में उन्होंने रीजंस एंड प्रॉब्लम्स पूछी थी. सेकेंड वाले ऐसे में उन्होंने रीजंस एंड दे हैव आस्क्ड यू द रीजंस एंड सॉल्यूशंस. इन द थर्ड ऐसे दे हैव आस्क्ड यू द प्रॉब्लम्स एंड solutions. See, Reasons. yeah, not reasons, solutions. How can we solve this problem? Problems and solutions. See, all of you can see here, all the 3 are different. First case, they're asking you reasons and problems. Second case, they're asking you reasons and solutions. Third case, they're asking you problems and solutions. Do you see the difference? देखो एक बार देखो what are the reasons पूछे what problems might it bring तो reasons पूछे and problems. Now come here, what are the reasons, how can we solve this problem? So they're asking you reasons and solutions. Now let's look at the third one. What problems does it cause? They're not asking the causes, they're asking the problems only. What problems does it cause? So they're asking the problems and then they're asking how can we solve these problems. So they're asking problems and solutions. Is this clear now what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. तो उन्होंने ये 3 चीजों में से 2 चीजें पूछनी है हर एक क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम ये मत गलत करें कि हमें क्या पूछा जा रहा है. So we have to understand what are they asking in that question. Is this part clear now to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Now let's see how do we attempt this essay. So let's take any essay. Let's take the first one out of this. तो मैं स्टूडेंट्स को ना इस essay को प्रिपेयर करने के लिए ये बोलता हूँ कि तीनों एक एक बार लिख दो. The first one, the second one and the third one. So ताकि कोई डाउट ना रहे. ठीक है. So let's begin with the first one. So first of all, what do I do in the introduction? सबसे पहले ना तुमने टॉपिक ही एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस कराना है. So think about this in this sense that the examiner does not have the question. You have the question. You are going to write the essay. The examiner is directly going to understand the question. कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है. आपने नहीं बताना तो हाँ मतलब उसने नहीं देखना. So first thing I'll do is I introduce the topic. So I'll write it is true that it is always in a problem solution essay. It's normally true only. So it is true that today there is lack of respect for the elderly in many countries. Topic is clear. Did I paraphrase it? थोड़ा बहुत paraphrase करके लिख दो and it's fine. Is it fine? Done? Yes, sir. Yes, sir. Then you're going to simply do in this essay. I intend to discuss the reasons behind this problem. And also the negative consequences of this on the society. एंड इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं प्रॉब्लम्स का मतलब कुछ नहीं होता बट क्या होता है नेगेटिव नतीजे जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं. दैट्स इट. This is what you're going to write in the second sentence. That's all that the introduction is for this essay. Now, do you understand this essay introduction? If you have any doubts, anyone, please let me know. No, sir.
नो, सर इसमें कोई हमको आंसर नहीं देना है ना? इसमें कोई यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, विल राइट दैट इन द बॉडी पैराग्राफ्स। कैसे? यहाँ पे कोई चॉइस नहीं करना, ये ओपिनियन ऐसे नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना मैं एग्री करता हूँ कि डिसएग्री, कि ये फायदे ज्यादा है कि नुकसान। सो इट्स अ नॉन ओपिनियन ऐसे, दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एसेस। इज इट क्लियर? यस। Sir, excuse me. Yes. Problems means consequence, no? Yes, So, negative consequences. Yes. negative consequence. Need a negative consequence. Yes. Problems, Okay. right? Problems cannot be positive, right? Okay. Okay. So they are Okay. mainly negative only. Okay. Okay, sir. Okay. Anyone has any problem with my introduction? Let me know. Anyone has any doubts here? Otherwise, this is how we write the introduction. No, sir, it's good. Good. So now let's do the same thing. I'll teach you some other words. So instead of, I'm going to write the introduction for the second one also. So instead of true, you can use some other words which means true only. But like irrefutable. Irrefutable means we cannot deny something. If we cannot deny something, that means it is true. So you can use certain vocabulary words if you want. Another word that student uses instead of true, undeniable. Undeniable also means you cannot deny something. Okay, so you can use such words instead of true, and then just explain the topic that many students find it difficult or face difficulty. And now another word, face difficulty in concentrating in the classroom. That's it. I have given the topic. That's it. Then what is being asked of me? What are the reasons? So that's that's what I'll write here. In this essay, I intend to Yes. discuss the. What's the meaning of intend? Anyone? Will Let's discuss. करना. It's my purpose. In this essay, my purpose is to discuss the reasons and what are we asked? Reasons and discuss the solutions. reason. And solutions. And And also, yes, and also some, you can use another word for that, Will like discuss the reason behind the problem address this and problem. also negative consequences of this criteria. That's it. Now, if you're having difficulty, please ask me. सर Yes. अगर हमें कुछ अगर ग्रामर का अगर ये उस टाइम अगर ये हुआ तो हम लिख सकते हैं सर इन दिस एसे आई विल डिस्कस द रीजन एंड सम सॉल्यूशन. Very good. So instead of intend, you can also write this. Intend, you can replace it by this. In this essay, I will discuss the reasons behind this problem and also the negative consequences of this on the society. Is it clear? Yes. You can do that. Intend is not a necessary word. You can completely avoid it. Is it clear? Yes, sir. और ऐसा भी नहीं है कि इसको नहीं लिखोगे तो बैंड्स कम हो जाएंगे. It's not that impressive of a word. So even if you skip it, you're not losing out anywhere. So don't think एक word लिखने से मेरा आधा बैंड ज्यादा आ रहा है. ऐसा नहीं होता है. Okay? So write what you write correctly. अगर intent to में गलती हो रही है तो अच्छा है क्या लिखना? अच्छा है will लिखना easy है, better है. Okay? Same with the third essay. Now can someone do it now for me? Any volunteers? सर मैं करा करो, Karan. पहला दूजी पढ़ लो मैं सर. ये ले, मैं क्वेश्चन ले जाता हूँ तेरे लिए नीचे. आ जाओ. ओके, चल. Natural resources such as oil, forest. Yes, Channa. Sir, before we go to third one, I have a question about the introduction on the second one. Yes. In this essay, I intend to discuss the reasons and also some steps to address this problem. Reasons behind the problem. Yeah, should be you right. should write that behind the problem. You're right. Okay.
Okay, here instead of writing this problem again, we can write it. Now we can use it for it. Is it clear? So tackle the problem. Yes. Tackle is another word for address. You can use it and some steps to tackle it or mitigate it or address it. Okay, or solve it. You can use. Yes, It is true it is true that that the uses of yes. Say. the uses of uses sir Usage. हाँ जी oil Okay. forests and fresh water is at very high rate. No. Mm, the usage of is Uses of natural resources कर दिए सर. yeah, Non-renewable resources. non-renewable is a good word. Yes. Why not use that? Renewable resources. And then you can give an example like oil, fresh water, and forests is happening. Happen. If you want to write alarming, I will use the word excessive Excessive. at an excessive rate. Okay. In this essay, I tend to discuss the problems of this and also give some solutions. बस सही है ये ना. To solve these, Solve these complete it. solve these problems. Very good. Now, is it clear, everyone? Here, it would be better to write. Um, um, instead of writing problems, we can use some words like negative consequences of this. Situation word we can use. No, situation is fine. What's the problem? Hello. Oh, that. So, anything anyone wants to ask here? Is it clear? Anyone wants to ask any doubts, anyone? Okay, a lot of you did not notice this, but I'll tell you something that you missed out. So please pay focus here. What's the word we wrote here? Problem. Okay, what's the word we wrote here? Problem. Problems. Why? Because give some suggestions. One more problem. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? Problem. हमें प्रॉब्लम्स पूछी हुई है. यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है. इस ऐसे में प्रॉब्लम्स नहीं है मल्टीपल. हाउ कैन वी सॉल्व दिस? Problem. Problem. ठीक है, तो ये चीजें जरूर देख लेना प्लीज. जहां पे प्लूरल लिखना है वहां पे प्लूरल लिखना. आई कांट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स मैं ना जब चेकिंग करता हूँ आई जस्ट पुट अप यहाँ पे मैं क्या लगा रहा होता हूँ. एफ खाया हुआ है, कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है. लाइक इंग्लिश में ना इसके भी नंबर हैं. ग्रामर मैटर्स. यू आर टेकिंग एन इंग्लिश एग्जाम. So don't make that mistake. Grammar is really important. If you skip these S, जहाँ पे बिना बात के क्या लगा दोगे,
प्रॉब्लम्स लिखा दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, जो पूछा है उसको प्रॉपरली पढ़ के वैसे आंसर करना। अगर प्लूरल में आना है तो प्लूरल में करना। इज इट क्लियर? सर Yes, sir. अगर एक से अगर उसमें प्रॉब्लम्स अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा हाँ तो फिर हमको यहाँ पर प्लूरल पुट करना होगा ना। हाँ, देख यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट कॉज, यस। तो फिर हमें प्लूरल लिखना होगा। अगर व्हाट प्रॉब्लम होगा तो फिर वो व्हाट। पूछेंगे ही प्रॉब्लम्स, वो यहाँ पे होगा, देख वो यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन में जिसमें प्रॉब्लम पूछी नहीं है, जिसमें रीजंस एंड सॉल्यूशंस पूछे हैं। देख वहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ कैन बी। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जिस ऐसे में प्रॉब्लम्स नहीं पूछी होती, रीजंस एंड सॉल्यूशंस पूछे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम एक ही होती है। ठीक है? ओके सर। जिसमें प्रॉब्लम्स पूछी है उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, ज्यादा। ज्यादा है ठीक है, तो जो दिखा है उसके हिसाब से करना। इज इट क्लियर? सर। Grammar is important. I check this when I check your notebooks. Okay. Anyone has any doubts here? Can I move forward? Sir, Yes. last one, they are asking up for solutions. Yes. How can we solve these problems? Okay. Okay. Got it. Got Got it, it? sir. Okay. So now let's begin with how do we attempt the body paragraphs. So let's take this essay and let's look at it. Okay. So this is our essay. This is our introduction. Okay. Now I have a question with you. Question from all of you. What are you going to write in the first body paragraph? मेरे को बताओ क्या लिखना है, तुम क्या लिखोगे? रीजन लिखने हैं। Reasons. Reasons, right, Rennie? Right, Taran? Yes. What are Yes. the Okay. Can you also write the problems first? I'm just asking you something. ठीक है? Yeah. Can you? ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ देयर आर नहीं, मेरा जवाब ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन है क्या तुम पहले प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो, हाँ या ना? नहीं सर। Sir, either way it is okay. One problem and two No, no. reasons or two No, reasons and I'm asking what do you need to write first? Reasons? Reasons. Can you also write problems first? Reasons. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ Okay. ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ क्यों? ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ का प्रॉब्लम लिखांगे अच्छा ठीक है, इस ऐसे में तो पहले क्या लिख रहा है? Problem. Problems. तो मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो। कैन यू राइट? ओके, द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यू कैन। ठीक है, बट ना एग्जामिनर को ये पता नहीं है कि तुमने पहले क्या लिखना है। माइंड ओके, आई वांट एक सेकेंड। ओके, so you can write, you may not write, whatever you write, but the examiner does not know. So the first sentence in the body paragraph, we are going to tell him again that in this paragraph, I am going to discuss the reasons. That is called a topic sentence. Okay, sir. That gives clarity to the examiner कि इस paragraph में he is going to read the reasons or problems, whatever the case might be. For example, here my first sentence be, there are several reasons why the respect for the elderly is decreasing day by day. Sorry. Now tell me, does the examiner have any doubts? What are you writing in this body paragraph? Yes or no? no. No sir. So you have to give this sentence for sure. Of course, you can write it also like this. The first reason why why the respect for the elderly is decreasing. The same thing. I just want this word. क्या word चाहिए मुझे? कौन सा word? Reasons. Just reason. I want this word in the first line so that the examiner knows you are discussing what. What I mean is, अगर तुम ऐसे start करोगे ना firstly और यहाँ पे लिखना लग जाओगे तो अब तुम्हें ही पता है तुम क्या लिख रहे हो, reason लिख रहे हो कि problems. You get the point? This is wrong. Yes. Okay, both the first and the second thing is right. Here you're going to give the reason also,
पहला अप्रोच भी चले जाओ या सेकंड भी चले जाओ, दोनों ठीक है। पर अगर थर्ड अप्रोच लोगे ना, सीधा फर्स्टली लिख के, और एग्जामिनर गेस कर रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो, वो नहीं चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर? सी हियर, व्हाट डिड यू राइट? Firstly. नाउ व्हाट आर यू राइटिंग? मेरे को बताओ, पहला क्या, पहला रीजन है कि पहला सोल्यूशन है कि पहला कॉन्सिक्वेंस है, पता है किसी को? No. No. So this approach is wrong. Both the first and the second one you can do. In both the first and the second one, you come to know that you are discussing what? Reasons. Reasons. Is it clear? Yes. Okay. Then you give the reasons one by one. Okay. To begin with. Okay. Well, I discussed this essay in my class, so I know the reasons. I'll quickly tell you the reasons so that we can be quick about it. The first reason that I discussed in the class for the lack of respect is अभी ये कैसे करा था? The reason is that elderly are competing with youngsters for jobs. Okay. So the पहला reason ये है कि elderly are competing with youngsters for jobs. देखो retirement age बढ़ गई है. People are living longer. So they have started, like they also want to work at 60, 70. They are healthier than before. At 60 in the past, people used to not be healthy. So they stopped working. Now youngsters look at older people as their competitors. You don't respect your competitors that much. So एक reason मैं ये बोलूँगा कि elderly are competing with youngsters for job. This is the reason for lack of respect. Second reason, in my opinion, why they're being respected less is that they're not the source of advice. They're not the only source of advice and suggestions nowadays because of the internet. Today, if we face a problem, we go to the internet. For example, I'll give you an example. In the past, if you needed to cook something and you didn't know the recipe, whom did you call? You called your grandparents. Mostly, you called your grandparents or your mothers, elderly people. You called elderly generations and asked you, okay, batao. Now what do? We open what? Internet. YouTube. We open YouTube and we cook. So we don't look, we feel we don't need who. हमें जरूरत नहीं रही है, किसकी जरूरत नहीं रही है, हमें ऐसा लगता है, हमें किसकी जरूरत नहीं रही है? बड़े लोगों की बड़े वो लोगों की elderly people की Elderly. You get the point? यस Okay, because we have YouTube for information. We go to the YouTube. क्यों मम्मी दादी की क्यों जरूरत है for cooking? If you want to, you can go there, right? Is it clear? Like that. And the third reason would be why we are lack of respect. Anyone? Any other reason? Why do you think the lack of the respect for elderly is decreasing? They As cannot they time spend with their elder, with their elder. Any and other? they thinking the match Yes, like very Sir, good. The gap. third, okay. Sir, gap generation gap. yeah generation gap yes Generation gap or thinking differences in opinion. ठीक है, like for example, अब now example दे दो. In India, many elderly believe कि women को क्या नहीं करना चाहिए, women should not वर्क work work. Work. But what do youngsters feel कि ये जो उनके principles हैं वो आज के ज़माने में काम नहीं नहीं आएंगे नहीं आते, उनकी बातें पुरानी होगी, वो आज के लिए सही नहीं है. So इसलिए भी उनकी respect कम हो रही है. Is it clear? यस yes So the third reason is differences in opinion. Any doubts कितने here? पॉइंट लिखने हैं? देखो ये भी अब एड्रेस करते हैं. देखो do you read this and do you tell me you understand this? 2 points with explanation is better than Without it. Do you understand what I'm trying to say? Yes. Sir, I think 2 points better है. हाँ, The फिर first साथ में क्या paragraph. क्या मैटर करता है? explanation explanation matter करता है Explanation. ठीक है, तो ये ना, ये 10th का पेपर नहीं है, +2 का पेपर नहीं है कि 10 रीजन लिखे होगे नंबर भी 10 आ जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो रीजंस कम लिखेंगे, 2 या 3 रीजंस लिखेंगे, पर उनको अच्छे से क्या करेंगे? explain एक्सप्लेन. Is it clear? yes I have a doubt. Yes. What's the doubt? सर वहाँ पे लिखा हुआ है there are several reasons why the respect is elderly. So Yes. the respect क्यों आ रहा है वहाँ पे? the क्यों आ रहा है?
Why the respect for elderly is decreasing. No, it is not needed. गलती से डल गया. It's not needed. You're right. It's a पर typo. दो ईज आ रहे हैं सर, वर्ब दो. या वो गलती से बाय रिस्पेक्ट फॉर एल्डरली यहाँ पे ना इज नहीं आना था, फॉर आना था. बाय रिस्पेक्ट फॉर एल्डरली इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. आई एम सॉरी, आई जस्ट टाइप्ड इट क्विकली. ओके ओके सर. मैन. ओके. Any doubts? Any other doubts here? This point. Any doubts here? No, sir. No, And sir. Vishal, I'm very happy that you're reading so well. So that's good, right? Pay attention like that. देखो मैं या क्या करता हूँ, अच्छे से पढ़ो. Okay, good. That means you're attentive and you are not facing जो हम एक ऐसे था ना, वो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ क्या? You're not facing this problem. Children find it difficult to concentrate or pay attention. So you're not facing that problem at least. Okay, so let's move on. Okay, so we are going to write 2 to 3 points, but we need proper explanation. अगर 2 points लिखोगे explanation के साथ चलता है. अगर 2 proper इतनी अच्छी explanation नहीं बन रही, 3 लिख दो. और 3 से ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करनी है. 3 is our limit. We are not going to exceed 3. Okay. Now let's come to the next part. What are we going to discuss in the next paragraph? Problems. Problems. Let's discuss the connectors here also. After that, you can continue with furthermore. You can use in addition. You can use besides that. All these points means iske alawa ek aur point. This. Apart from this, any other word? Another reason is that any connector that you want, you can use. Yeah. Moreover, Moreover, Yes. Your wish. अपनी मर्जी है, कोई भी ले लो. इतने मैंने यहाँ पे कितने बता दिए देखो. I've told you 6 connectors. Use any. You're going to use 2 more. एक तो to begin with लिख दिया. वो first point के लिए वही आना है. फिर कुछ भी और लिख लो. Any of these. That वाले के बाद comma नहीं आता. बस ये understand करना. There's no comma after the that one. Another reason is that. No comma here. Don't put a comma here. Okay. Let's move on. Now, the biggest mistake students make here is they put the word on the other hand here, or however, or something like that. अभी understand करो, यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं. देखो, I have a question from you. Advantages का उल्टा क्या होता है बताओ. What's Disadvantages. disadvantages, very good? Agree का उल्टा क्या होता है. disagree, Disagree. Okay, very good. Reasons का उल्टा क्या होता है बताओ. Solution. solutions, नहीं होता है. नहीं होता है. ठीक है. Okay. कई एप्पल्स का उल्टा क्या होता है बताओ. एप्पल्स का उल्टा कुछ होता है कि नहीं होता है. नहीं. नहीं होता सर. तो हर एक चीज का उल्टा नहीं होता है लाइफ में ना. ऐसे Yes. रीजन का कोई उल्टा नहीं है. ठीक है. रीजंस का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है. जैसे एग्री का ऑपोजिट क्या हो गया. डिसएग्री. Disagree. Agree. एडवांटेज का उल्टा हो गया डिसएडवांटेज. रीजन का कोई भी उल्टा नहीं है. लाइफ में हर एक चीज का नेगेटिव नहीं होता है. कई चीजें क्या होती हैं, नॉन पॉजिटिव या नेगेटिव होती है. उनका कुछ नहीं होता, वो न्यूट्रल होती है. रीजन कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई पॉजिटिव बात नहीं है, उसका कुछ उल्टा नहीं है. तो यहाँ पे भूल के भी कौन सा कनेक्टर नहीं लगाना है. On the And Contradict करने वाला. या कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे. जस्ट लीव इट. डायरेक्टली वी आर गोइंग टू टेल द एग्जामिनर कि इस अब हम क्या डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम्स. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू रिपीट व्हाट आर. सो आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक अगेन. जब भी पैराग्राफ चेंज होगा ना, तुमने टॉपिक दोबारा लेना है. देखो, जब मेरा पहला बॉडी पैराग्राफ आया था, मैंने यहाँ पे टॉपिक दोबारा लिखा था. देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली इज डिक्रीजिंग. Now I'm going to the second BP where I'm going to discuss the negative consequences. दोबारा मैंने टॉपिक को एक बार लेना है. The lack of respect for elderly has many negative consequences on the society. So there are many negative consequences of this on the society. And then you're going to give your points. Is it clear? Like firstly, secondly, finally.
So that's it. No connector here. And then you're going to discuss your negative consequences, firstly, secondly, finally. Any doubts here? Can you all hear me? सर वहाँ पे प्रॉब्लम था यस सर हाँ, तो प्रॉब्लम्स का मतलब ही क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस Negative Negative consequences. I नेगेटिव discussed that, right? I discussed that before. Problems का ही मतलब है नतीजे. Negative yes yeah सर सर I got it reason then yeah, reasons पहले paragraph में फिर negative that's what we had to discuss, right? Reasons yes and problem सर problem. ये दूसरे पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है ये ऊपर वाले ऊपर ये तो पहला पैराग्राफ ही है, पहला बीपी. इसमें And- reasons लिखे हैं. एडवांटेज नहीं, एडवांटेज तो ऐसे लिखने ही नहीं है. एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे नहीं है ये रीजन प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है. पहले रीजंस लिखे, नेक्स्ट पैराग्राफ वी आर राइटिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अंश कुछ नहीं है यहाँ पे. एडवांटेजेस नहीं लिखने इस ऐसे में. वो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे में लिखेंगे, इस ऐसे में नहीं. ओके सर सेकंड एक बार आप Yes. पैराग्राफ दिखा दोगे पहले वाला देख, सीधा लिखना है. देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली इज डिक्रीजिंग एंड देन यू आर गोइंग टू गिव मी द रीजंस. ये मैंने बस उनके कनेक्टर्स लिखे हैं पॉइंट्स के बीच में. क्या क्या कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं. Like ओके you सर can use further more in addition besides that. फिर यहाँ पे भी हमने कनेक्टर्स लिखे हैं, फर्स्टली सेकेंडली फाइनली. मेरे ये कनेक्टर्स फिक्स्ड होते हैं. जैसे पहले वाले में ये वाले हो गए, दूसरे वाले में ये हो गए. दैट्स इट. आई डोंट ओवर थिंक दैट. आई डोंट थिंक कनेक्टर्स चेंज करके तुम्हारे बैंड्स बढ़ने वाले हैं. सो स्टॉप ओवर थिंकिंग दिस. इसको लिखो, अच्छे से पॉइंट्स लिखो. एंड दीज आर वेरी गुड कनेक्टर्स. लोगों को लगता है दे आर वीक कनेक्टर्स. नो, दे आर वेरी पावरफुल कनेक्टर्स, वेरी गुड कनेक्टर्स. दे गिव सो मच क्लैरिटी. पहली नेगेटिव प्रॉब्लम ये है, सेकेंड ये है, फाइनल प्रॉब्लम ये है. इससे अच्छा कनेक्टर है नहीं है. सच्ची बता रहा हूँ. ये जब पढ़ते हो ना, इतनी अच्छी क्लैरिटी आती है. ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है. नो अदर कनेक्टर इज एज पावरफुल एंड एज गुड एज दिस वन एंड एज सिंपल एज दिस. ओके, तो ये BP2 है ये BP2 है, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस करे? ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए. That's it. Now you're going to come to the conclusion. In conclusion, Okay. you're going... Yeah. Any other doubts? सर वन पैराग्राफ ही लिखना है जैसे रीजन और Yes, प्रॉब्लम्स yes. One paragraph, it's a two-body paragraph essay. No more, Okay. no three paragraphs read it. Now we come to conclusion. In the conclusion, I'm going to say, simply you're going to read the speech. There are many reasons why today youngsters respect the elderly less than the past. But, and this has many adverse consequences on the society. Adverse means anyone? बुरे. Correct. Negative. Very good. You can use the word effects because we've already used the word consequences. That's it. Nothing else. There's one thing you can do additionally here if you want to. You can give your points here, such as there are many reasons why today less than the past, such as you can give the reasons if you want. But I don't do that because it makes it complicated. So you first write this line and then you write this line. This has many adverse consequences on the society. That's it. कुछ और करने वाला नहीं, इतना सा ऐसे है. So बताओ, is it clear? Any doubts now in this essay? No, sir. No? सर आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस तो बता दो इसके क्या क्या पॉइंट आएंगे. क्या पॉइंट है कि हम रिस्पेक्ट एल्डरली की कम करते हैं. पहले तो उनकी दे आर फेसिंग लोनलीनेस एंड डिप्रेशन बिकॉज वी डोंट रिस्पेक्ट देम. हम उनसे इतनी बात नहीं करते हैं. तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो हो रहा है एल्डरली पीपल की हेल्थ पे. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. फिर बोथ मेंटल हेल्थ पे, दे फील लोनली, दे फील डिप्रेस्ड, anxiety anxiety, they feel all these things because we don't spend time with them. We don't like, so like पहला रीजन ये हो गया. सेकंड मुझे लगता है कि ना सेकंड इसका इफेक्ट है कि न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ने का रीजन भी लैक ऑफ रिस्पेक्ट है. डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और ओल्ड एज होम्स बनने. हाँ, ओल्ड एज Old age होम्स में homes. भेज देते हैं हम. Mhm. तो इससे जो लव एंड अफेक्शन मिलती थी वो एल्डरली को नहीं मिलती है.
So we prefer living alone rather than living with our grandparents and parents. And when in older age, we don't like living with our parents because of like we don't respect them as much. तो फिर हम उनको वो old age home में भेज देते. That is a second negative effect that you can do. And the third negative effect I would say is um, what else can you talk about as a negative effect of this on the society? We don't respect them. Um, so तुम ये बोल सकते हो कि We don't spend time so much. या और यंगस्टर्स का क्या नुकसान हो रहा है ये बताओ क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो हमारा सर क्या ऐसा लिख सकते हैं कि अगर वो आज उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो इन फ्यूचर उन्हें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी like, हाँ तो ओल्ड एज में नहीं मिलेगी वो तो पता है पर अब बताओ हमारा क्या नुकसान हो रहा है तो बताओ इफ आई डोंट रिस्पेक्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट इज द नुकसान मेरे को आज क्या नुकसान हो रहा है आज कल्चर सर की कल्चर नॉलेज सर उसका जो हाँ वो जितना सर उनको एक्सपीरियंस है वो आपको सर ठीक हम है वो एक्सपीरियंस गेन नहीं ये करने नहीं कर पाएंगे वेरी सर। गुड तो जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमें फायदा नहीं दे रहा नहीं तो उनका यस नॉलेज नहीं एक्सपीरियंस हमें होगी। हेल्प करता था वी आर लूजिंग आउट ऑन द एक्सपीरियंस दैट दे हैव गेन नहीं तो दैट एक्सपीरियंस कुड हैव हेल्प्ड अस आल्सो राइट यस yes so we are not able to take advantage of that experience in that sense is it clear यस यस सर। Yes, yes. so these would be my 3 points here okay is this essay clear यस सर। is it easy Yes, sir. an easy essay do you think यस बताऊं तुम्हें अभी पता नहीं है पर ये कितना इजी है ऐसे देखो मैं तुम्हें को समझाता हूँ एक बात देखो एग्री डिसएग्री ऐसे लो तुम्हें पता है ऐसे लिखने से पहले तुम्हें क्या सोचना पड़ता है क्या points. नहीं और नहीं मतलब हम एग्री एग्री करेंगे या डिसएग्री डिसएग्री करना है। और disagree हाँ हमें पहले डिसीजन लेना पड़ता है पता है कितना डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना अब पता है क्या करता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं पहले सोच लेते हैं मैंने क्या करना है इमोशनली सोचते हैं मैंने तो क्या करना है एग्री करना। Agree. और फिर जब लिखने बैठते तो पॉइंट आते ही नहीं एग्री के तो सारे पॉइंट किसके सूझने शुरू हो जाते हैं फिर डिसएग्री। और फिर सारा फिर रेज होना शुरू होता है फिर उसमें इतना टाइम वेस्ट होता है ये ऐसे इतना सिंपल है इसमें तुम्हारे को कुछ पहले डिसीजन नहीं लेना है इट्स अ नॉन ओपिनियन ऐसे दैट मेक्स इट रियली इजी यू डोंट हैव टू थिंक फर्स्ट ठीक है ऐसे के बीच में भी कुछ पॉइंट्स हो जा कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्री डिसएग्री में ऐसा नहीं है एग्री डिसएग्री के ऐसे के बीच में पॉइंट्स हो जा तो पूरा ऐसे बदल जाता है तुमने स्टार्ट करा किसके साथ एग्री के साथ बाद में सारे पॉइंट्स तुम्हें सूझने लगे डिसएग्री के द होल ऐसे गेट्स रूइंड और फिर तुम पेपर में तुम्हारे को यू स्टार्ट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट तो ये गड़बड़ होती है यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस ऐसे इज इजियर यस सर। Yes. Okay, so let's discuss the other two essays really quickly, and now you can help me. We have already written the introduction. So in the first paragraph, you have to write what reasons here. I'll teach you some other lines. Like for example, here there are several reasons, right? So I'll ask you, how can you paraphrase this? There are several reasons why children are unable to pay attention or concentrate in schools nowadays. Okay. Can you paraphrase this line for me? Anyone? This is my body paragraph one. I'm teaching you body paragraphs. So any ways you can paraphrase this with for me? The main reason is Okay. The main reason why. Give me the whole topic again. The main reason why. why children find difficult. Yeah. Is that. Is it clear? In that sentence, you're going to give the reason in the first line itself. Is that clear? Okay. Give me another Yes. one. Another paraphrasing for this line. Anyone? Etc. First and foremost, the reason why children are unable to pay attention is that
So the language, sorry, there was a phone call. The first and foremost reason why, it will be the same thing. Instead of main Sir, reason, write what? The first and foremost reason. That's it. Nothing else will be different. Main की जगह क्या word लिखना है? Is this clear? yes, Instead sir. of writing main, you're going to be writing first, you're going to write the first and foremost reason. Everything else remains the same. So you can do that. Okay. Any other way you can write this? Sir, ऐसे भी लिख सकते हैं. Nowadays, children are unable to pay attention Yeah. in a school because of many reasons. Very good. Because of the following reason, we'll write. Following reasons. And then, very good. That's a very good approach. So you can use that also. अब पता है मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ? Because एक ये तुमने लिखनी है यहाँ पे, एक तुमने ये कहाँ भी लिखना है कंक्लूजन में. तो इसके लिए Okay. 2-3 तरीके याद हो जाएंगे तो अच्छा है. So you can write that. Like for example, in the conclusion, right here, in conclusion, children are unable to write. और यहाँ पे following की जगह क्या word लिख देना? Many. Okay, or you can even write because of 3 main reasons. जो ऊपर लिखे हुए हैं, 3 main reasons. Okay, and steps can be taken to resolve this problem, to address this problem. Here it'll be better to write, but steps can be taken. So that way you can write for your conclusion. Is this clear? I wanted to teach you another word. Have you heard of this word attributed to? Yes, sir. You can also use that. But वो ना थोड़ा complicated है. वो ऐसे पहले बनाना पड़ेगा. The inability of children to concentrate can be attributed in classrooms, can be attributed to several reasons. If you know how to use it, you can even use this one. ठीक है? Sentence formation should be clear here. So that's it. It's your wish. तुमने कौन सा करना है? तुम्हारी wish है. तुम्हारे को I've given you 4-5. I'll share this lecture with you. I'll share the PDF with you. You don't need to write. It'll be shared with you. तुम्हें जो अच्छे से करना है कर लो, but have certain ways here. Okay. Anything else you want to ask? तो पहले तुमने फिर ये लिखा. Yes, Channa? Sir, यहाँ पे, in this case, they have asked what are the reasons and some measures to address this issue. Yes. First body paragraph is fine, so we are going to start with the main reason, Yeah. first, second, or something. And while starting the second paragraph with the solutions, how No should I connector. start? No connector. Directly. The many steps can be taken. And it should not start with the however there are many something. No, leave that. Don't put any connector. Directly start. Many steps can be taken to tackle the problem of youngsters being unable to see. One thing I am really particular about is whenever you start a new topic, I want the topic to be, whenever you start a new paragraph, I want the topic to be Stated again. Yeah. I don't want you to be writing just to tackle the problem. I don't like that. Whenever, in good English, whenever you start a new paragraph, you remind the topic again. You don't go with ये वाली problem. कौन सी problem? नहीं, वो बताओगे दोबारा. So one habit, if you want to improve your bands, start doing this. But ये ना paraphrasing करनी पड़ती है थोड़ी बहुत. अगर नहीं भी कर पाओगे, same लिख दो. चलो. The tackle the problem of children being unable. Okay, sorry, I messed it up. Many steps can be taken to tackle the problem children being unable to pay attention to schools, not because of the following reasons. मैंने दो मिला दिया, I think. Yeah. Many steps can be taken to tackle the problem of youngsters being unable to concentrate in classes. Any other doubts? Anyone? Okay. Can you quickly tell me the reasons?
एनीवन? चलो बताओ। वाई? तुम बताओ, तुम भी तो बच्चे ही हो एक तरह से, मेरे लिए तो बच्चे ही हो। बताओ क्या रीजन है, वाई यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट? तो ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। क्यों होता है डाइवर्ट, बताओ। इंटरेस्ट कम होता है। इंटरेस्ट मोबाइल नहीं फ्री जाके सर इंटरेस्ट कम होता है, सर Students are डिस्ट्रैक्शंस। nowadays students are more concentrating on the video games and internet, यस सर, social सोशल media. मीडिया। अच्छा अच्छा मेरे को बताओ, जब तुम मेरे क्लास में बैठे हो तो थोड़ी मैं तुम्हारे को वीडियो गेम खेलने देता हूँ, फिर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं होता? इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता सर है सर। इंटरेस्ट का भी सर मैटर है। इंटरेस्ट नहीं होता, कोई पढ़ाता हो रहा है, इंटरेस्ट कहीं हो। Sir, distraction. यस सर, सब डिस्ट्रैक्शन। करते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी होती क्लासरूम है। में कौन सी डिस्ट्रैक्शन है, बताओ। सर क्लासमेट्स। क्लास में So teachers unable to develop the interest for a particular subject. ओके, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट रीजन यू आर सेइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट, टीचर्स ना थोड़ा बोरिंग वे में पढ़ाते हैं, दैट वुड बी Yes, sir. वो conventional method use करते हैं। टीचर्स टीच इन अ सर बोरिंग। बीच बीच में गेम खिलानी चाहिए। Yeah, they should employ techniques to make the class more interesting. Game Interactive classes नहीं या होती। इंटरेक्टिव होनी चाहिए, जैसे आई एम आस्किंग यू कि तुम भी कंट्रीब्यूट करो। Yes, sir. That's why we all pay Yeah. attention. सर एक्टिविटी करानी चाहिए। Yeah, they should make it more interactive. I also feel sometimes कि देखो मेरे को तुम्हें साथ साथ में लिखवाना चाहिए, like that, हम थोड़ा और इंटरेक्टिव कर सकते हैं। I also feel that. Okay, tell me another reason. Okay, second reason I would say is I agree, the sleep deprivation. Children do not sleep on, Time. टाइम। and that's why they are what? Sleepy in the classroom. Do you agree with this? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. नेटफ्लिक्स ने जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना, किसी चीज़ ने नहीं करी। नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, ऑल दी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स। ठीक है, मेरे टाइम पे तुम्हें मैं बताऊं, मेरे घर में DD1 DD2 होता था, और ना 11 बजे के बाद कुछ आता नहीं था। अगर किसी को पता है, आई डोंट थिंक एनी ऑफ योर आर माई जनरेशन, बट उसके बाद ना डॉट डॉट आता था, कुछ नहीं आता था, स्क्रीन पे ब्लैंक होता था, मुझे सोना पड़ता था 11 बजे। तुम्हारे पास इतना कुछ है करने के लिए। अब 24 घंटे चलता है सर सब कौन कुछ। से टाइम में? 24 घंटे सर नेटफ्लिक्स चलता है। हाँ, ठीक सर है। कौन से टाइम में? यार जब मैं छोटा था अंश, ओके, पुराने टाइम में। पुराने टाइम, पुराना टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000s, 1998, यस 1992। सर। तो ये दो तो ज्यादा ही पुराना हो गया। सर हाँ, अभी तो डाउनलोड का भी ऑप्शन देता है, अगर अभी हम नहीं उसका देख भी सकते हैं रहता तो है। बात करते हैं। ये ज्यादा पुराना हो गया। सर ज्यादा पुराना हो गया ये तो। ठीक, ओके। आई होप तुम बोलते सर इतना भी पुराना नहीं हुआ, पर तुम सर सब नहीं, इतना पुराना भी नहीं हुआ सर, अभी भी मतलब सुनते हैं अपने पेरेंट्स से कि ये उस वक्त में होता था या लास्ट टाइम ये Yes, होता sir. था। सर मनी टाइम या सर डिस्कस। हम उस टाइम पैदा हुए थे सर, बस ये था। ओके। हम जेंजी बन गए। अच्छा चलो, डोंट मेक मी फील ओल्डर नाउ। चलो आगे चलो। नहीं नहीं सर, यू आर यंग सर, यू आर यंग। अच्छा चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट चलो। और क्या रीजन है? कैन यू थिंक ऑफ अनदर रीजन व्हाई दे आर अनएबल टू पे अटेंशन और कंसंट्रेट? सर सब्जेक्ट्स काफी टफ है, कंपटीशन बढ़ गया है, यस, कंपटीशन बढ़ गया सर, स्ट्रेस है। इसलिए इंटरेस्ट लूज हो जाता है कि कुछ हो तो रहा नहीं, छोड़ दो Students पढ़ाई। like you. कैन आई से दिस? यस सर, यस ब्रेक्स सर, लैक ऑफ ब्रेक्स। मीन। Long classes without breaks is another reason. हाँ सर, ये पॉइंट है असली सर। ठीक है, देखो आई एग्री, टफ होना भी रीजन है, पर वो लैक ऑफ इंटरेस्ट में ही आ जाएगा कि वो टीचर को इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, लैक ऑफ ब्रेक्स इज अनदर रीजन दैट आई फील कि मतलब 2-2 घंटे की क्लास होती है तो डिफिकल्टी आती है कंसंट्रेट करने में। 2 घंटे किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करना इजी सर बीच नहीं। में ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए, राइट? 45-50 मिनट्स के बाद ब्रेक होनी चाहिए, 10-15 मिनट्स की। एवरी आवर देयर शुड बी अ ब्रेक, राइट? सो आई वुड से दैट। सो अब यहाँ पे सोल्यूशंस भी कर दो। पहले तो टीचर्स को ही बोलो कि अपने मेथड्स इंप्रूव करें, पेरेंट्स को बोलो कि रात को टाइम अच्छे से, मतलब पेरेंट्स शुड मेक श्योर दैट चिल्ड्रन स्लीप ऑन टाइम, टाइम। इतने घंटे, कम से कम 8 घंटे प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, दैट इज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फिर स्कूल्स को भी प्रॉपर बीच बीच में प्रॉपर ब्रेक्स वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। इज इट क्लियर?
Yes, And sir. academic classes can be rotated with like can be separated by like music classes or classes which are more like leisure classes. You get the point? ताकि A वो physical activity should be there. हाँ तो बीच में ऐसे रखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 5 लगातार सब्जेक्ट्स वाली क्लासेस है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पहली क्लास अच्छी होती थी मेरे स्कूल में, दूसरी अच्छी होती थी, तीसरी चौथी तक मुझे क्या आने लग जाती थी। नींद। ठीक है, फिर मैं ब्रेक की वेट, फिर तीसरी चौथी के बाद मैं ब्रेक की वेट करने लग, रिसेस कब होएगी। फिर रिसेस के बाद दोबारा थोड़े एक दो पीरियड ब्रेक वो होती थी, फिर मतलब ऐसे ही चलता रहता था। इट वाज लाइक दैट। आई थिंक प्रॉपर ब्रेक्स आर नीडेड, दे शुड हैव पुट सर्टेन क्लासेस इन द मिडल। ओके, एनीथिंग एल्स हियर? No, sir. नो। Okay, so this is the essay. Okay, the last essay I'm going to give you to write. So तुम्हारा essay तुम लिखो. You can send the task to me or to ma'am. मेरे को पता है, मैंने ना बहुत सारे, तुम सबने मेरे को टास्क भेजे हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने चेक नहीं करे. I promise I'll do it today. So I'll do it now after the class. और अगर किसी और, अब ये भी भेज देना, इसका ये मतलब नहीं कि ये नहीं भेजना. Send me this one also. So write this and send it to me or to ma'am. Send it to one person. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. That's Sir, it. please scroll up little. I want to take a screenshot. For Down or scroll up? Scroll down for this one, sixth one. Scroll down. For the solutions, little down. This one I have taken. Yeah, this one. One second. Okay. Okay. Fine. I'll share this with you in the I'll just copy paste. अभी मैं paste ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए सब. यस सर, ये सर अपलोड भी कर दीजिएगा सर यूट्यूब पे। चैट बॉक्स में शेयर कर दो। मैंने Yes, कर sir. दिया, देखो मैंने वो चैट अभी कर दिया, अब शेयर कर दिया। ये सारा जो आज लिखा था सारा तुम्हारे साथ शेयर हो गया। चैट बॉक्स में नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके। ओके, मुझे लगा चैट बॉक्स में शेयर कर दिया आपने। सर आप होमवर्क बताया, फोर्थ वन है ना, इज इट फॉर एनरोल? No, anyone can write. Okay, any one of you can write. ठीक है, those who are enrolled send to ma'am, those who are not enrolled send to me. Okay, done? Yes, sir. yes sir. Okay, that's it then. See you then on टुमारो, मंडे। Monday sir. Monday. Okay. Thank you, sir. Okay sir, thank you sir very much.